हेलो एवरीवन, आपका नई दिशा के इस लाइव सेशन में स्वागत है। आज हमारे साथ तस्विया जी और सीमा जी जुड़ी हैं। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज चाइल्ड सेफ्टी एंड हाउ वी कैन कीप आवर चिल्ड्रन सेफ इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग आवर होम्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे चाइल्ड सेफ्टी के बारे में, कैसे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं अपने घर पर और घरों से बाहर। I am glad to say that first of all, I want to say thank you to Seema for joining in. We are truly grateful कि आप आज अपना टाइम निकाल कर हमारे पेरेंट्स के लिए सेशन कर पा रहे हैं। चाइल्ड सेफ्टी इज ऑफ utmost importance एंड हम सबको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. And I think it's important for, especially important for children with disabilities. And I hope this session is fruitful for all the parents who will be watching this in the future or who are watching this right now. Today, Tasviya will be having the main conversation with Seema. Tasviya हमारी टीम की एक अहम हिस्सा है. वो हमारी हेल्पलाइन और कंटेंट टीम की पार्ट है and she is also a counseling psychologist. Tasviya, you can take over. Thank you so much, Muskan. Firstly, thank you so much, Dr. Sima, for joining us. We're delighted to have you here. Like Muskan mentioned, ये एक बहुत important aspect है, and there are a lot of parents who have been concerned about their child safety. We have had a lot of requests from parents as well about how to deal with this, how to ensure a safe environment within the within home, within external environments as well, and how to go ahead in case something happens. Right. So, the aim of our session today is to have a general awareness and understanding about how do we ensure safety for children, particularly for children with disability, within the home environment and in the external environment, and the steps that can be taken if, in case something unfortunate happens. So, we are really happy to have you with us, ma'am, as an expert. एंड सभी माता पिताओं को बहुत धन्यवाद है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. आई होप दिस विल बी अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू. हम पहले शुरू करेंगे थोड़ा क्वेश्चंस लेके. मैं पूछती हूँ सीमा जी को, और आप वो कवर करने के लिए ट्राई कीजिएगा, और इसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे फॉर 15 मिनट्स. या डज दैट वर्क? Shall we start, ma'am? Yes, Tasya ji. Thank you so much. Yeah, go on. All right. So, yeah, firstly, I am sorry. I would like to introduce Dr. Sima, and because I don't think people will be familiar with the different aspects. So, Dr. Sima is a mental health consultant and the founder of an organization called Together We Can Foundation. It is an advocacy forum for child and disability rights. She has a doctoral degree from Amsterdam, and she's also a mental health professional with 20 years of experience. She actively advocates towards child rights and understanding disability through a neurodiversity lens, which is something that is very important right now. Apart from that, she has been involved, she has actively engaged in a lot of social work, which has been implemented or which has impacted in the disability field, has brought significant changes in the disability field, especially when it comes to the home state, her home state, Kerala. Right. All right. So that's about Dr. Sima. And shall we go ahead with the questions now? Yes, Tasya. And also I would like to add that मेरे भी दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, और child safety is very much close to her, just like any other mother. Yeah, so that should add on. I think that is a very valid point, because as a parent, we believe that parents are the experts. And yes. All right, so let's begin. My first question is, why do you think safety concerns are more intensive for a child with disability? Firstly, do you think that it is more intensive for a child with disability? आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि एक विकलांग बच्चे के लिए ये एस्पेक्ट चाइल्ड सेफ्टी क्या अधिक गहन पे होता है, और ऐसा है तो क्यों? Absolutely, Tasya. Child safety, हम
कैसे सिखाते हैं सभी बच्चों के लिए, चाइल्ड लाइन के वीडियोस देखे तो उनमें 3 शब्द सिखाते हैं हम सारे बच्चों को, नो, गो, टेल। ये हम सबको मालूम है, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे मटेरियल्स है, और हम सब सारे बच्चों को एक ही तरीके से सिखाते हैं, और वो जो 3 शब्द हम सिखाते हैं, नो, गो, टेल। लेकिन जब एक बच्चा नो पहचान ही नहीं सकता है, और सपोज वो बच्चा नो बोल नहीं पाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि मुझे यहाँ नो बोलना है, अगर उस बच्चे में कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्टीज है या नो बोलने में कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज है, तो उस बच्चे का सेफ्टी इश्यू बढ़ जाता है। दैट इज वन थिंग। द सेकेंड पार्ट इज टेल। कैसे बोले, किससे बोले। फर्स्ट इज नो पहचानना है, उसके बाद मुझे बोलना आना चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए, नहीं तो कुछ और कम्युनिकेशन होना चाहिए, और देयर शुड बी सम अडल्ट्स। दैट इज द टेलिंग। और गो, कैसे जाएंगे अगर वो दे व्हील चेयर यूजर्स और छोटे बच्चे हैं, कि सपोज इट कुड बी थेरेपी सेंटर, इट कुड बी स्कूल, कहाँ जाएंगे, वो किससे बोलेंगे, कैसे बोलना है, ये सब हाउ डज दैट हैपन, ये एजुकेशन कहाँ से मिलेगा बच्चों को। सो इट हैज टू स्टार्ट एट होम। ये सारे कॉन्वर्सेशन अबाउट चाइल्ड सेफ्टी इस एक दिन का कॉन्वर्सेशन नहीं, एक यूट्यूब सेशन में भी कंटेन नहीं होगा। जैसे कि हम सबको प्रेयर है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, सभी बच्चे सेफ हो, हेल्दी हो, इट्स आवर विश। लेकिन हमें ये भी पता है कि हो सकता है कि मेरे बच्चे के साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन आई डोंट हैव टू लिव इन एंजाइटी। मुझे डर डर के नहीं जीना है कि अरे बाप रे आज कुछ हुआ है, कल क्या हुआ। सो वी डोंट वांट टू लिव इन मिसट्रस्ट, हमें इतनी एंजाइटी से भी नहीं जीना है। बस वी नीड टू हैव नॉलेज, जैसे कि मुस्कान ने पहले शुरू किया था कि वी नीड द नॉलेज। कौन सा नॉलेज। वन इज अपने बच्चे का नॉलेज किसको है, मुझे, आपको, उस बच्चे के फैमिली को, इमीडिएट फैमिली, द मदर, द फादर, द सिबलिंग्स। वी नो द फैमिली नोज द चाइल्ड बेस्ट। उस बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल्स क्या है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल्स क्या है, उसका डे टू डे किस किस के साथ मिलजुलता है, कहाँ कहाँ जाता है, दोस्त कौन है, थेरेपी सेंटर में थेरेपिस्ट कौन है, स्कूल में टीचर्स कौन है, फ्रेंड्स कौन है। ये नॉलेज ऑफ हाउ इज द डेली रूटीन ऑफ माय चाइल्ड। फर्स्ट नॉलेज इज बच्चे की डेली रूटीन का knowledge is the first one. After that, we can go on to the rest. So first is gaining that knowledge and knowing your child ki क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है. So how all that is the first thing. So there is no one sure short module की ये लो और बच्चे को सेफ रखो. It's very very individualized. उस बच्चे के लिए डिफरेंट तरीका हो सकता है सेफ्टी बढ़ाने का, उस माँ बाप के लिए उसके कॉन्टेक्ट कहाँ रहते हैं, वो किन से मिलते हैं। अगर दोनों माँ बाप दे आर वर्किंग एंड बच्चे को अकेले रहना है, तो देन द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स विल चेंज. सो इट्स नॉट वन कॉमन मॉड्यूल फॉर एवरीबॉडी. अपने बच्चे के लिए हमको एक बनाना है. वी हैव टू बिल्ड द व्हाट यू से, जैसे कि हम बोलते हैं ना आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बोलते हैं, उसी तरह इंडिविजुअलाइज्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल व्हिच इंक्लूड्स इनफ नॉलेज about your child. I think that's the start. Thank you so much. That's very interesting that you said safety is also individualized. क्योंकि हमें लगता है कि safety मतलब सबके लिए एक ही चीज है, generalized रहता है. But the way that you mentioned that it should be specialized according to the interests and needs of every child, that is, I think, a very valid point. Thank you so much. So how do you think, what do you think is the role of the family and the neighbors or the community members in helping in this process, in understanding what are the safety concerns for a particular child? Again, जब आप child बोलेंगे तो child is anybody from 0 to 18 years. So वहाँ भी individualization होना है. So if we know
what age group of children are we talking about? If we are talking about preschoolers or very young children, इतना तब इतना बहुत एजुकेशन हम बच्चे को नहीं दे सकते. अभी जो हो रहा है, the things that I see is mostly terminologies like safe, touch, bad, touch. So safe, bad and touch, ये तीन शब्द is prominent in the child safety conversation which I usually get to see. But here पेरेंट्स को ये पेरेंट्स को और हम टीचर्स को सबको ये पता होना चाहिए कि abuse happens 90% from safe people. Safe people मतलब बच्चा जिनको सेफ समझता है, बच्चा जिनको ट्रस्ट करता है. So when we say trusted adults, ये ट्रस्ट इज अ फीलिंग, सेफ्टी इज अ फीलिंग. ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है कि am I feeling safe with somebody. ये स्ट्रेंजर्स और ये अब्यूज जो अब्यूज करेगा या सेक्सुअल ऑफेंडर एक विलन जैसे नहीं दिखेगा, वो अनसेफ नहीं दिखेगा, वो बहुत ट्रस्टेड दिखेगा, बहुत सेफ दिखेगा. उनके पास सारे वो चीज होंगे जो बच्चे के बारे में वो जानता है. तो द ट्रबल इज जब हम द करंट नैरेटिव्स अराउंड सेफ्टी is can get a little confusing, especially with younger children who don't understand the concept of what is safe, what is the meaning of safe, what is the meaning of trust. ये preschool बच्चे को ये concept it's too high. And touch, we use the word always touch. क्या बस touch से ही abuse हो सकता है? नहीं, sexual abuse last and final is most often the touch. उससे पहले बहुत सारे ग्रूमिंग होता है. ग्रूमिंग मतलब जो भी वो अब्यूजर है वो बच्चे को पहचानने में, बच्चे के बारे में जानने में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इस बच्चे का रूटीन क्या है, इस बच्चे का ट्रस्ट ले लेता है वो ग्रूमिंग पीरियड में. सो व्हेन वी यूज वर्ड्स लाइक सेफ्टी एंड ट्रस्ट sometimes it is not enough. तो इसीलिए which is why I again say it has to be individualized. You know, एक क्लास से या बच्चे इधर आओ मैं सेफ्टी का क्लास लेती हूँ, आपका ये बॉडी पार्ट्स किसी को छूना नहीं, वेरी गुड, विच इज गुड. बट द ट्रबल इज बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मेरा चेस्ट और माय vagina or penis or my lips are bad places. You know, so sometimes when they get confused with this terminologies, ये bad touch है, तो ये touch bad है या वो body part bad है. एक so अगर कुछ टच वहां हुआ तो मैं बैड गर्ल बन गई क्या, मैं बैड बॉय बन गया. सो दीज terminologies of bad is it's very very what do you say, something we need to have more conversations about. So, what I'm trying to say is, let's not get stuck with certain boxes or protocols. Let's keep this conversation alive with your child. कुछ भी हो सकता है. एक एडवर्टाइजमेंट में अगर एक मूवी में दिखेगा तो ओपन दैट कॉन्वर्सेशन. जैसे कि मेरे दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं है, वो उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी नहीं है, लेकिन बड़े बच्चे हो तो भी अगर मेरे मन में एक डाउट है तो कॉन्वर्सेशंस अलग रखना है. अगर न्यूज़पेपर में कुछ पढ़े तो अच्छा ये ऐसा हुआ है, हम ओपन द कॉन्वर्सेशंस, डराने के लिए नहीं है. तो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट नॉलेज अबाउट योर चाइल्ड. द सेकंड थिंग इज अबाउट ये टर्मिनोलॉजीज को हमें रीथिंक करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. इट स्टार्ट्स विद द फैमिली, it starts with the neighborhood, it starts with the schools. Let us all just move out of this safe touch, bad touch, trusted adult. This is all wrong. ये wrong नहीं है, लेकिन क्या ये काफी है? It's not enough. Yeah. That's... Yeah, definitely. Thank you so much. I think that is very valid because especially teachers या family members हमारे लिए role models होता है. तो बच्चों के लिए वो रोल मॉडल्स जैसा रहता है. Yeah. तो it doesn't even cross a child's mind that something like this could happen from a teacher or from a therapist or from any person who is closely associated with the child, right? So having that conversation about this with the child is very important.
I totally agree with that. Would you be able to tell us more about what are the other ways in which we can have conversations or help the child understand this? या वन इज जैसे कि हम कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी सिखाते हैं ना, जैसे कि हम बॉडी का हाइजीन एंड हेल्थ सिखाते हैं, सोप लगाओ, ब्रश करो, सो दैट इज पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी. सो ये वी डोंट हैव टू जंप स्ट्रेट अवे इनटू those three body parts and make that one class. Those parts are like any other body parts. जैसे कि हम nose, eyes, क्या कोई हाँ मेरे eyes में poke कर सकता है? No, that's also a no. That's also a go and tell. So why are we exaggerating a few body parts and saying that only this is private? क्यों मेरा नोज प्राइवेट नहीं है क्या? मेरी आंख प्राइवेट नहीं है? ये सब इट्स माई बॉडी. और मैं अगर किसी को, एक अंकल आके मुझे ऐसे, ओहो तो स्वीट, अगर मुझे वो नो लगे, मेरा चीक्स होगा, मेरा प्राइवेट पार्ट, मुझे नो बोल, आई कैन से नो. मेरी बच्ची या लड़का या लड़की कोई भी, दे कैन से नो. सो समटाइम्स वी जस्ट हैव टू से योर होल बॉडी बिलोंग्स टू यू. आपका पूरा शरीर आपका है. और कोई भी आके ऐसे पैट करना, या जैसे कि घर में ही बहुत सारे माँ बाप है, अंकल को पप्पी दो, आंटी को झप्पी दो, टाटा बोलो, ये बोलो, वो बोलो, गोदी में बैठो. अगर बच्चा वहां ना बोल रहा है, नहीं मम्मी कुछ कुछ, मे बी वो अंकल और आंटी बहुत अच्छे होंगे. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अंकल और आंटी अब्यूजर्स है, नो, दे कैन बी वंडरफुल पीपल. अगर माई नेव्यू और माई नीस बोलता है और मैं बुला रही हूँ आओ मेरे साथ, और वो बच्चा ना बोल रहा है, तो मुझे खींच के नहीं लेना है. आई नीड टू रिस्पेक्ट द नो ऑफ द चाइल्ड. और उस माँ को ऐसा नहीं लगना चाहिए, अरे मेरा बच्चा नहीं जा रहा है, और जाओ जाओ, सो लेट द चाइल्ड फील सेफ. पहले बच्चे को सेफ लगना चाहिए कि मैं उसके गोदी में बैठूं या नहीं. बच्चे को सेफ्टी फीलिंग्स, they know, the children know. Trust your children. So when your child is saying no, trust them, don't force. जब वो चाइल्ड मेरे साथ सेफ फील करेगा, तो दे विल कम क्लोजर, दे विल फील लव्ड. So it will be a slow process. So I had recently एक सुपरमार्केट में, वो बच्चे को मैं जानती भी नहीं, माँ को भी नहीं जानती, वो काउंटर में वो जो लड़का था, यंग बॉय, ही गेव, एक चॉकलेट दिया, वो चेंज नहीं था, और साइड से वो, तो मैं पीछे खड़ी थी, चॉकलेट दिया और बच्ची ने ना बोली. चाइल्ड सेड नो. एंड द मदर इज सेइंग, नहीं बेटा ले लो, भैया है. क्या भैया? नो, व्हाई वुड यू, ले लो. तो वो बच्ची माँ के दुपट्टे से पीछे ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये लड़का उस बच्ची के हाथ को खींच के वो चॉकलेट फोर्सफुली दबा के, और उसके बाद वो माँ बोल रही कि थैंक यू बोलो भैया को. एंड द चाइल्ड इज रिफ्यूज to say thank you, and the mother back on the child saying thank you bolo. And then I was standing there. हम ये भी करते हैं और no go tell भी सिखाते हैं. What are we doing? We are confusing our children. बच्चे को ना बोलना सिखाओ और समझो वो क्यों ना बोल रहे हैं. So these are which is why तस्वीर, ये एक क्लास में या एक कॉन्वर्सेशन का टॉपिक नहीं है. इट्स अ ह्यूज टॉपिक. There has to be tons of conversation. लेकिन if I'm looking at my children's safety, अगर यहाँ families देख रहे हैं, तो आपको बस आपके बच्चे के बारे में think about that. Now we are here talking about general safety guidelines, but let's individualize it. And I want to work with my children. Let me think about what's happening in their life. So yeah, so these concepts start at home. Yeah, I understand. It's a great example that you gave. I think that is even we don't realize that we are doing something like that, right? So Yeah. it is important that we are consciously aware of these things. And from what I understand, मुझे लगता है कि families
फैमिली में ही वो assertiveness सीखना जरूरी है बच्चों को. So how do you think families or parents can help the child be empowered and have that space or voice for themselves? Yeah. Now, these are two things. Again, I always start with child is a very diverse age range. Children with diverse needs, diverse communication abilities. So it's like it's very broad, Tasvia, but nevertheless, how can parents have communication, conversation, and connect with your child, regardless of which age group or what needs they have? It, like I said, start with the knowledge of your child. How does your child communicate? वहां से शुरू करो. चाइल्ड जहां है वहां से शुरू करना है. मुझे ये सब मालूम है, मैं यहाँ. और it's not like pulling the child to knowledge. We have to start where the child is. अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो ना बोल रहा है, the no can start with probably, usually children say no with food. First they start to say नहीं मुझे ये खाना नहीं पसंद है, or maybe the dress, मुझे ये dress. They, how do they communicate their no? Either it could be pushing. I'm talking about little children. Usually the first communication of no starts with food. Even with babies, if you see, you put a spoon and oh, they will spit it. That's their first indication of no, I don't want that in my mouth, or this doesn't taste good to me, or this is hurting me, or कुछ तो वो बच्चा बताना चाह रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है. नो. नाउ दैट देयर स्टार्ट्स कनेक्टिंग विद द चाइल्ड. वहां माँ बाप को कुछ कोई नहीं. नाउ द कंफ्यूजन कैन बी, तो क्या बच्चा नो बोले तो हम ओके फाइन डोंट ईट? नो, दैट्स आई एम नॉट सेइंग दैट. द थिंग इज, ये अपॉर्चुनिटीज है आपको आपके बच्चे के नो बोलने का तरीका सिखाने का, सीखने का, एंड टू फिगर आउट व्हाई शी सेइंग नो. क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, क्यों फूड को नो बोल रहा है, या क्यों मेरे बाल, व्हेन आई एम डूइंग द हेयर, व्हाई इज माय चाइल्ड सेइंग हाँ मम्मा इट हर्ट्स. सो व्हिच मींस देयर आर ways in the child to communicate. घर में ही बच्चे बोल रहे हैं नो, उस नो को पहचानिए और यू हैव टू बिल्ड फ्रॉम देयर कॉन्वर्सेशंस. उस नो से शुरू कीजिए. तो बच्चे को नो पहले घर में बोलना सीखना है. लेकिन अगर बच्चा घर में नो बोले तो चुप करो, देन वो बाहर कैसे बोलेगा नो किसी को? So yeah, so start, understand the no of your child, preferences, like dislike, comforts, discomforts of your child at home, and build on that. Yes, Yeah. that is very essential. Everything starts at home, they say, right? Yeah. Yeah. All right. So for our parents, one setting in which they are particularly concerned about the safety of their child is, one is school, the school environment, because for a child with disability, even if it's in a special school or inclusive school, irrespective of that, uh, communicating or expressing their needs might be difficult. So what are the safety concerns that we need to be aware of within a school setting and within a therapy setting, and how do we deal with that? Yeah. Now, जहाँ माँ बाप नहीं है, जहाँ बच्चा अकेला जा रहा है, फर्स्ट थिंग्स अगेन नॉलेज. स्कूल में रूटीन क्या है, मेरा बच्चा कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन सा पीरियड से. अगर पीई पीरियड है, सो पीई टीचर कौन है, व्हाट इज द टाइम टेबल. स्पेशल स्कूल और थेरेपी, अगर थेरेपी सेंटर हो तो इट इज अ वन ऑन वन. देयर इज नो वे दैट द चाइल्ड, अगर बच्चे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं आपका बच्चा, एंड इफ द चाइल्ड इज below 18 and cannot communicate, थेरेपी सेंटर में वन ऑन वन सेशंस में इधर आपको अंदर रहना है. अगर आप अंदर नहीं रह सकते, आप काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेज मैंडेटरी है. दैट इज द लॉ. सो कोई भी थेरेपी सेंटर्स one on one sessions में, I'm not talking about group sessions or special school setting, I'm talking about therapy center जहाँ
स्पेशल एजुकेशन या ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी, कुछ भी, एक थेरेपिस्ट है और आपका बच्चा है, एंड देयर इज दिस वन ऑन वन सेशन हैपनिंग, और द फर्स्ट थिंग इज दरवाजा बंद नहीं होना है। अगर दरवाजा बंद है तो माँ या बाप या कोई बच्चे का फैमिली मेंबर अंदर होना है। अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो वन वे स्क्रीन, जैसे कि आपको बाहर बैठ के आप अंदर देख सकते हैं, बच्चा नहीं देख सकता बट यू कैन सी, एंड वो भी नहीं हो सकता है तो सीसीटीवी फुटेज आपको बाहर बैठ के यू शुड बी एबल टू सी। अगर वो भी नहीं है तो आपको you have the right to ask for the CCTV footage of what is happening with your child. Otherwise, what is the word for illegal? It is illegal. What do you say for, what is that word? Kanun ke khilaf, or whatever that Hindi word is. It is not legal, so it is not okay. So, parents should know that it's not okay. One of these should happen. Either you're inside, or you have the one-way screen, or you have the CCTV footage. Without that, one-on-one therapy is not okay. Yeah. The open door policy, Open right? door, certainly. And बस open door one-on-one में जो अगर 1 घंटा है या 45 minutes, whatever time duration, उस 45 minutes में क्या हुआ, क्या सिखाया, बच्चे ने क्या किया, क्या अच्छा हुआ, क्या उतना didn't go very well, वो सब लिखे, रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना, इट इज नेसेसरी, दैट डॉक्यूमेंटेशन इज जरूरी है, और वो आपका हक है कि वो आईईपी हर एक थेरेपी का आपके पास समरी होना है, और इट इज नॉट लाइक sitting, coloring. It's not one word. It's 45 minutes of your time and your money. You need to know what is happening, and every 3 months, ये आपका goals renew करना है. Of course, that is not as much about safety, but then I'm starting with safety. It's about knowledge. आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या goals है आपके बच्चे का, especially with children who have sensory difficulties, जैसे कि touch. कोई बच्चे को टच अच्छा लगता है तो हम ये बैड टच, सेफ टच, बच्चे को अगर टच अच्छा लगता है तो वो छूने देगा. The child will be okay with the touch anywhere, so why would the child say no? No नहीं बोलेगा. और therapist, it is very easy for the therapist, so therapists are not, I'm not trying to paint therapists as abusers, no. But if we are talking about safety, we have to know that safety protocols उस therapy center में होना है. वैसे trust your therapist, of course trust your therapist, but safety protocols होना चाहिए. We do that. सब कुछ trust के ऊपर नहीं चलेगा. You need to have it has to be written down there, वो therapist का qualification. So we need to know वो पूरा जानकारी, स्कूल का टाइम टेबल, अगर स्पेशल स्कूल है तो we need to know टॉयलेट कैसे जाएंगे बच्चे, कौन है वो सपोर्ट स्टाफ, कौन है, उनके नाम क्या है, कैसे, इफ योर चाइल्ड इज अ व्हीलचेयर यूजर, हाउ डू दे डू दैट, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है. दैट्स 100%. नॉलेज इज योर राइट ऑफ द Yeah. पेरेंट. Yes, definitely. And this is great. I think we have a clear understanding about what to look for in a therapy environment. Yeah. Definitely. What about school environment? What do you think is important there? In a mainstream school environment, of course, the good thing, there are flip sides and both sides. There are a lot of children who can speak up for their children. So, if my child is going through a mainstream school, and if my child has a disability, my first thing will be I I will build the safety network in the school for my child. So, मैं मेरे बच्चे के फ्रेंड्स को मैं बनाऊंगी. आई विल हैव टू, उसके फ्रेंड्स के माँ बाप से मैं कनेक्ट करूंगी. अगर मेरा बच्चा खुद फ्रेंडशिप नहीं बना सकता है और डिफिकल्टीज है कम्युनिकेशन में या कुछ भी, आई विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव. मेन स्ट्रीम स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिलती है, एंड आई एम
not blaming the teachers or the therapist who might not know, लेकिन आपके बच्चे के बारे में आपको ज्यादा पता है ना, वो सब्जेक्ट नॉलेज है टीचर्स के पास, सबके पास आपके बच्चे का नॉलेज एक एक करके क्लास, every teacher will not have to learn your child from the beginning. So you are the key lead in your child's school. IEP का leader, IEP मतलब again individualized education program, whatever is the Hindi word for that, individualized. Okay, that is you are the leader of that. Okay, तो आपको ये प्रोग्राम में एजुकेशन का मतलब बस मैथ साइंस इंग्लिश, दैट्स नॉट अलोन एजुकेशन. एकेडमिक्स इज वन पार्ट ऑफ एजुकेशन. आपके बच्चे का सोशल स्किल्स, दैट एक गोल है. आपके बच्चे का सोशल स्किल्स मतलब कौन कौन दोस्त है, क्या किन से किसके साथ बैठता है, कौन दोस्त सपोर्ट कर सकता है. सो इन सब का जानकारी आपको स्कूल जाके यू हैव टू बिल्ड दैट सेफ्टी नेटवर्क इन योर स्कूल. वो एक टीचर या एक दोस्त नहीं, इट वी हैव टू जेंटली बिल्ड दैट नेटवर्क एंड स्लोली वो बिल्ड करके यू कैन वीन ऑफ, बिकॉज आपके बच्चा वहां जब सेफ महसूस करेगा तो कम्युनिकेट करेगा. Simultaneously we have to work on communication skills. If the child is non-speaking, if the child can use apps, or if the child can show pictures, or if the child can use whatever your goals are for the child in terms of communication. So that's your job. Safety network build karna आपका गोल बनाइए. बस आप वेट करके नहीं रहिए कि स्कूल बनाएंगे, वो तो टीचर्स तो ट्रेंड है. नो, बच्चे का पूरा जानकारी आप में है. लीड द प्रोग्राम. अगर स्कूल आपको इंक्लूड नहीं कर रहा है, again it's illegal. The school has to include the parent. IEP में parent is the lead, and that is also Kanun. It is the law. The parent has to be part of the IEP. So if any school is pushing the parent away, ki saying nahi 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 tum mat aao, that's not okay. Aap but again, the next part is how to complain. But yeah. Yeah. Before we go into that, since you mentioned about law, you now we know that one law is that any child, like the parent has every right to involve in the Yeah. education program for the child, right? Yeah. So apart from that, what are the other laws and legal rights that parents need to be aware of? Yeah, I think the one law which everybody, not only parents of children with diversity or disability, but all of us need to know, there is a Rights for Persons with Disabilities Act 2016. वो गूगल में just type RPWD 2016. वो पूरा का पूरा law you can download. Every school, every therapy center, everybody, especially the parents who have children, should please keep the copy of that. वो पढ़िए, वो आपका, you need to have the knowledge. अगर हमारे पास knowledge नहीं है तो हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है ना. तो knowledge नहीं है तो we can't say अरे मुझे तो पता नहीं था. Then we'll have to पता करो, वो law है, download करो गूगल में, read it. Chapter 3 specifically, उस आरपीटी में चैप्टर 3 स्पेसिफिकली स्कूल के बारे में है. बस 3 ही पेज है, तो वो पढ़िए. स्कूल में क्या क्या होना है, स्कूल क्या क्या करना है. मेनली मेन स्ट्रीम स्कूल, स्पेशल स्कूल के बारे में ही है, थेरेपी सेंटर के बारे में भी है. और जहां भी आप कह रहे हो, एनीवेयर इन इंडिया, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज होना है, वो भी लॉ है. अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां आपको कोई परेशानी है स्कूल में या थेरेपी सेंटर में या नेबरहुड में, कुछ आपको चाहिए टू नो मोर अबाउट, आपके डिस्ट्रिक्ट में देयर शुड बी पीपल हु यू कैन गो टू. अगर वो कमिटी नहीं बनाया गया है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आपके स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर से आप मेल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं. अगर आपके स्टेट में डिसेबिलिटी कमिश्नर भी नहीं है तो आप चीफ डिसेबिलिटी कमिश्नर को ईमेल कर सकते हैं. जो कमिश्नर अब है,
he is very responsive and मेल कीजिए. अगर रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा तो दिस हैज टू गेट डॉक्यूमेंटेड. जो भी परेशानी आपको थेरेपी सेंटर में या स्कूल में हो रहा है, बस वहां जाके बात करके वापस मत आइए. जो भी आप बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट, पुट इट इन द मेल. सो अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, मुझे आपके आईपी में पता करना है, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, बुलिंग हुआ, कुछ भी, और स्कूल बोल रहा है कि हाँ नो प्रॉब्लम, हम देख लेंगे, वेरी गुड. लेकिन जो भी वहां मीटिंग हुआ, उस मीटिंग को आपको डॉक्यूमेंट करना है, इंग्लिश में या हिंदी में या कोई भी लैंग्वेज में. You have to send the email to the school. It has to become documented कि आपने ऐसा डिस्कशन स्कूल में किया और स्कूल ने ऐसा प्रॉमिस किया और दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. वो मीटिंग के रिपोर्ट आप स्कूल से वो नहीं, कुछ अच्छे स्कूल्स ऑफ कोर्स सेंड करेंगे, लेकिन द अदर स्कूल्स माइट नॉट सेंड, नॉट बिकॉज वो बुरे स्कूल्स है, बट take that as your responsibility as a parent. And same with therapy centers. अगर थेरेपी सेंटर में कोई भी थेरेपिस्ट से कुछ परेशानी हो, हमें स्ट्रेट अवे पुलिस से जाके कंप्लेन करने की जरूरत नहीं. लेट्स हैव अ डायलॉग विद देम फर्स्ट, क्या हो रहा है यहाँ. बट जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, प्लीज put it on an email record. Every institution will have an email ID because we are now, I think, digital India and all that. So I'm sure there should be an email ID. Yeah. Yes, definitely. So from what I understand, if there's any concern happening, any concerning issue or difficulty happening within the school environment or the therapy environment, any external environment, I need to have a conversation with the organization and I need to document it in a mail. Yes. Right? Yeah. अब email या any language, हाथ से लिखिए, whatever it is. And I use the word conversation, not fight. अगर आपका बच्चा वही थेरेपी सेंटर में कंटिन्यू करना है या वही स्कूल में जा रहा है, तो आप ये बैटल फील्ड मत बनाइए. ये it's not a war between school versus you or therapist versus you. No, एक प्रॉब्लम है और हम सबको मिलके उस प्रॉब्लम का सामना करना है. तो वी नीड द स्कूल्स, वी नीड द थेरेपिस्ट, ये सब. लेकिन उसमें एक थेरेपिस्ट या एक टीचर या एक सम पीपल आर नॉट सपोर्टिव. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब बुरे हो. इट्स नॉट लाइक दैट. सो वी नीड these support system, neighbors, schools, therapy centers, shopkeepers. We need everybody's support. लेकिन अगर एक आदमी से या औरत से परेशानी हो रहा है, तो whichever space they are in, get everybody else together and say, I need your help. So basically, आपका letter is a request for, I need a help. एक problem है और आप, I need your help, I need your support. That's absolutely fine. So we are not trying to label the school or the entire therapy center because of one therapist who did something really wrong. We need to repair and move on. So yeah, again, this all depends on context. So I'm making a very broad statement here, but totally depends on context. If it is sexual abuse, there is no conversation. It is law. It is straight police station. So it depends on what kind of issues we are talking about. So if it is a sexual abuse, there is no delay. We report immediately. That's it. Yes. There's no second question about There's that. no second question there. Yeah, got it. So, if after mailing the organization, if there is no response, then I have the right to contact the the child protection officer. Child protection. So इसकी सब जानकारी आपको अभी से, we need to have all that knowledge right now. एक प्रॉब्लम होने तक वेट मत कीजिए. अभी आपका बच्चा कौन से स्कूल में, थेरेपी सेंटर में जा रहा है, फाइंड आउट आपके डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, आपके वो, वेयर इज द बिल्डिंग, वेयर इज द ऑफिस, व्हाट इज द ईमेल एड्रेस. All of this, these are people who can help you, not necessarily people where you have to go only when there is a problem. You can go there to discuss several other things, to get
more facilities and support for your child. So say, for example, access to a park and need some support in a park or some accommodation. So these are resource people, including the police. It's not necessary that it has to be only for problems. In fact, ideally, take your child also. Let the children know that these are people who I can go to and ask for help. So knowing your support system is the first step uh, towards child safety. Yes, it Yeah, is important that we create that network for ourselves. yeah. Definitely. So apart from the child protection commissioner and the police station, what are the other sources or support organizations that are available? Do you know of any? Nayi Disha, of course, you are the lead. Yes, You of are course. across the country. Depending on which state you are, there are many, many NGOs, non-governmental organizations. In Kerala, I am specifically in Ernakulam, Kochi. So the thing is, even if you come to me, I'm going to say, go, I'm only going, even you are only, if it is sexual abuse, we are only going to guide the parents to report. So we are not authorities who can take action. We are like Nayi Disha or Together We Can or whichever other non-governmental organization can give the needed emotional, psychological support to the parent. जबकि वो बहुत परेशान हो जाएंगे उस टाइम के, कहाँ जाना है, किससे मीट करना है. तो नई organizations like Nayi Disha or any other NGOs in whichever state you are in, वो आपको they will guide you to कैसे लिखना है petition, कैसे draft करना है, कैसे नहीं लिखना है. We've had uh, sometimes mothers on they इतना गुस्सा है उसमें कि बहुत वो लेटर ही अब्यूसिव हो जाएगा. सो वी नीड टू, लेकिन वो उसके परेशानी हम तो समझ सकते हैं ना, बिकॉज कुछ हुआ है उस बच्चे के साथ. तो somebody has hit the child and we can't say, oh, be peaceful, गुस्सा तो आएगा. तो how can we help the family? How can we first help the child? Is the child affected by whatever is happening? Is the child safe? Does the child feel loved? Is the child okay to get back to a learning environment? That's the first priority. Then how do we support the family? Yeah, so organizations like all of us are one of the support systems. Yes, thank you so much. Just one last question from my end. So you mentioned about the child, like helping the child overcome this, and if something happens, what do I say to my child, right? I think that is a very important element as well, because अगर एक बच्चे को ऐसा कुछ unfortunate incident हुआ है, तो definitely the child will be disturbed as well. So what do you think a parent or family can do to help the child come out of that mental state? Yeah, again, Tasvia, this is depending A on the very broad, complaint. yeah, Yes, very I broad understand. question. So I'm just taking one specific instance in my mind. Let me presume that we are talking about a little girl Yeah, who probably has told and who has no clue that it was an abuse even. तो उस बच्चे को देखेंगे तो बच्चा इज वेरी हैप्पी, बच्चे को वही स्कूल में जाना है, वही थेरेपिस्ट से पढ़ना है, क्योंकि वो थेरेपिस्ट या वो टीचर या कोई भी हो सेफ था उनके लिए, ट्रस्टेड था. लेकिन आपको पता लगा कि ये हुआ है, तो your your child is very happy at that point. So it's you who know that, oh my god, this has happened. So it really depends कि हम कितना share करें उस बच्चे के साथ. अगर suppose the child is an older child and you notice that the child is struggling, then you need to work with the child and figure out, what is the struggle, gently through conversation. Seek professional help through a psychologist or anybody, through any trusted professional who the parent also can relate to. And then you hold the child close and say, this is where, if we have very strong narratives of bad touch and good touch, most children feel that they have become bad because somebody touched me in my private part.
So I have become bad. So now we have to then sit and unlearn ki no. So which is why how did we have conversations in the beginning? So it's very, very individualized, Tasvia. But the point is that it really has to be that context specific, and the key is in having the conversation going. Start with, is your child safe now? Agar aapka bachcha abhi safe hai and is moved out of this unsafe environment, that's the first thing. The second thing is my child feeling loved again, or is the child feeling, at peace again? If not, that is your next area of work. The third area of work, is my child ready to go back to a learning environment? Sometimes the children are okay, but the parents don't send them back to the school or to the therapy center, not because of sexual abuse. It can be any other thing. But the trouble is, the child wants to go, and there is a conflict between बच्चे को स्कूल अच्छा लगता है लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि ये स्कूल. So these are all very, very, very individualized context, and there is no one sure shot module of this is how we work with children after any kind of abuse. But when I say the word abuse, uh, if it is sexual abuse, there is no conversation. Within 24 hours, we have to report. Then, of course, everything else will have to start. But reporting will be the top priority. Yeah. Yeah, that makes sense. I feel like having that conversation is very essential, right? Because sometimes what happens is uh, it is a little uncomfortable having a like having the Yeah. conversation with the Yeah. child, Yeah. but at the same time, it is very essential that the conversation happens. Yeah. And I think that's very important. Yeah. Uh, Thank you so much for helping us out with all of these questions. I know I put a lot of questions out to you. And I'm No really glad that problem. we were able to talk about it. Yeah. अभी हम ऑडियंस से क्वेश्चंस लेते हैं. थोड़ा क्वेश्चंस आया है, so shall we go ahead with that? Yeah. Yeah. Sure. I'll read out the questions for you. Okay. Yeah. 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 So the first one is, may I know Dr. Sima's consultation center in Kerala? मेरा कंसल्टेशन सेंटर नहीं है केरला में. इट्स एन एडवोकेसी ग्रुप. वो ग्रुप पेरेंट्स का, प्रोफेशनल्स का, बस इट्स अ फोरम. बस वो फेसबुक में है, और वी हैव एन ईमेल आईडी twc togetherwecan@gmail.com. उसमें अगर आप जो भी परेशानी है मेल करेंगे, तो depending on what you're saying, we will refer you to the right places and guide you on what can be done. We are not a center, there is no building per se. It's just an advocacy forum which helps you through the process and connects you with the whatever support network that जो आपको चाहिए, we can link you up with. So it's TWC Together We Can at gmail.com. And the Facebook page is on Together. It's Together We Can. Kochi, Kerala, I think it should pop up on Facebook. Yeah, thank you so much. And if in case parents have difficulty in getting in touch with you, parents can also get in touch with us and we can connect them with Absolutely. you. Yeah. All right. The next question is, what are the confrontation techniques if bullying is emotional from relatives? So, how do we deal with emotional bullying from relatives? Yeah, again, depends on who are the relatives bullying. Is it a child? What is the bullying? I didn't understand. But when it comes to bullying, and if it is relatives, depending on who is this. If this is a mother, or I don't know who's asking this question, mother, father, who are first build the safety network of who understands you in this context. If I'm going to presume that this is a mother who asked, does your husband support you in the, does he also understand? Is there any other relatives, or it can't be all the relatives, right? So you're speaking about probably, I don't know, some specific. Again, what forms of first is, before we jump into confrontation with that, like we said with the safety, build your support network first. Get that emotional validation. आपने emotional बताया है, which means आपका emotional, you are also sad, you are anxious, and you might be angry. So first is आपके emotions को, you have to regulate that first. Second, आपको safe लगना चाहिए कि
this, you are fine, you're absolutely okay and safe, then build your safety networks. वो कौन है? अगर एक भी relative है, या can you find anybody else, friend हो सकता है, कोई भी, to at least talk about this issue in more detail. Confrontation is not the first step when you are already feeling distressed, because अगर आप confront करेंगे और वो counter करेंगे, तो you can get more into the bullying. So again, I'm not very exactly clear of what the issue is. So the point is, these need more conversations, more reciprocal. Is this what she needs to give me? Lots more of knowledge. Knowledge कैसा knowledge? मेरा knowledge ही काफी नहीं है. उस question में वो उस that person who asked the question has a lot of knowledge. वो experience का knowledge है, उसका experience का knowledge valid है. तो बस हमारे knowledge से कुछ नहीं होगा. We need to bring both the knowledge together, and then we make how to confront or how to, whatever. So your knowledge, I don't have enough. I need to know more. All right. If this parent can reach out to us separately, I think that would be Yes, helpful that will to be great. understand. We would love Yeah, to know more. yeah, Yeah, because it's important. What you're going through is not okay. What you're feeling is valid, and you certainly need help, and there is help available. So please reach out for sure. yes. And just to add, our helpline team is also available at any point of time. The helpline number is 844-844-8996. So any parent who wants to discuss further about anything related to child safety or any other topic can definitely reach out to us. And ma'am, we would definitely need your help when it comes to this topic Certainly. particularly. All right. Do we have any more questions, Muskan? That was all, but we understand that this topic is very sensitive. अगर किसी parent को कोई भी question specifically सीमा जी से पूछने हैं, we have put the mail ID on the chat. You can also call our helpline number. The number is also on the chat. It's 844-844-8996. Please reach out to us. We are there for you, and we hope that whatever you are feeling gets resolved. Thank you so much, Seema, for joining. I hope the parents were able to grasp something from this session. The future audience who will be watching this grasp something. Um, we are truly grateful that you are here today. For everyone who is watching, we have a session scheduled on What After Me this 30th of November. And if you want to know more about it, you can follow us, and we will be definitely giving out the information about that session. We hope that this particular session was helpful. Thank you so much, Seema. Thank you so much, Thank Tasvia, you. for giving your time today. And yeah, thank you so much, everyone.